ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। इजिप्ट के सिनाई पेंसुला के 2 अमेरिकी सैलानियां ते एक इजिप्ट गाइड नूं अगवा कर लिया गया। इजिप्ट के सुरक्षा अधिकारियों मुताबिक तिन्हां नूं सिनाई के सदर अल हितान जिले तो 5 किलोमीटर दूर तुराबीन जनजाति के खाना बदोशा ने अगवा किया। अगवाकार अलेक्जेंड्रिया स्थित जेल में बंद अपनी जनजाति के लोगों को रिहा करवाउण लई इजिप्ट प्रशासन ते दबाव बनाउण के उद्देश नाल तिन्हां व्यक्तियों नूं अणदस्सी थां ते लै गए ने। सुरक्षा अधिकारी अगवा सैलानियों को छुड़वाउण लई जनजाति आगुआं नाल मुलाकात कर रहे हैं। दस दिए कि फरवरी तो बाद इस खेतर च अगवा की यह 6वीं घटना है। ब्रिटिश कल्चर ते इस्लाम के वाधे प्रभाव को देखदे इंग्लिश डिफेंस लीग वालों एक मार्च कढ़िया गया। ब्रिस्टल शहर च कढ़े इस मार्च दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों विचकार हुई झड़पों तो बाद ही पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इंग्लिश डिफेंस लीग के 300 तो ज़्यादा हमायतियों ने मार्च दौरान इस्लाम खिलाफ नारेबाजी की। उधर ब्रिटेन में जमे कुछ एशियन लोगों को इस मार्च कारण निराशा भी हुई। उन्होंने कहा कि इन्होंने लोगों को सिक्ख्या की बहुत जरूरत है। उन्होंने भी कहा कि ब्रिटिश लोग उन्होंने वापस जाने की कह रहे हैं, जो कि उन्होंने जन्म ब्रिटेन में होया है। They are not wanted in Bristol, but I think education is the key. They need to be educated, to be honest, because a lot of them, I don't think they know what they're talking about, to be honest. They're telling us to go back to our own countries. We're born here, both of us, but, you know. As a society, we've still got a lot of work to do because if you've got idiots like this out and about, so it's kind of a bit of eye-opening as well because there are racists out there. It's still alive, isn't it? That you see, definitely. And it's still alive, and yeah, so kind of just eye-opening really more than anything. सुडान और साउथ सुडान में जारी संकट के मद्देनज़र दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने पहली बार निजी तौर पर गलबात की। उमर अल बशर ते सलवा कीर की यह मुलाकात इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा च अफ्रीकन यूनियन की 19वीं बैठक दौरान हुई। यह नहीं दस्या गया कि दोनों आगुआं विचकार की गलबात हुई, पर बैठक के खत्म होने पर दोहां ने हथ मिलाए। अफ्रीकन यूनियन ने दोनों आगुआं नूं अपील की है कि वह यूनाइटेड नेशनस वालों मिथी गई दूसरी समा सीमा मुताबिक अगस्त तक अपना विवाद हल कर लैण। दोनों देशों के विचकार सरहदां के निर्धारण, तेल कड्ढण संबंधी भुगतान और कौमी कर्ज के बंटवारे को लैके विवाद चल रहा है। Council welcomes the adoption by the parties of a new spirit of strategic partnership as the basis for a comprehensive resolution of all outstanding issues between the two states. In particular, their commitment never again to resort to force to resolve their differences, their commitment to respect the sovereignty and territorial integrity of each other, and to build a mutually beneficial partnership. Council reiterates its determination to impose sanctions against terrorist and criminal groups operating in northern Mali, as well as against any other armed groups that impede the search for a solution to the crisis and the efforts of ECOWAS and AU. The AU's support to the efforts to fully restore state authority over the concerned areas. Council also condemned the action of other negative forces operating in the region, including the FDLR. Council encouraged the governments of DRC and Rwanda to activate the existing bilateral mechanisms to address and to build confidence, including the joint verification mechanism. इंडिया च जर्मनी के अंबैसडर माइकल स्टेनर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल च इंडिया की पक्की सीट की हमायत की है। नवी दिल्ली च मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि जर्मनी भी यही चाहता है कि इंडिया नूं सिक्योरिटी कौंसल च शामिल किया जाए। माइकल स्टेनर ने कहा कि इस मामले में जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द तो जल्द इंडिया नूं सिक्योरिटी कौंसल में पक्के मैंबर की सीट मिल सके। उन्होंने कहा कि इंडिया लिए यूरोपीयन यूनियन सब तो वड्डा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि जर्मनी भी वड्डा यूरोपीयन ट्रेडिंग पार्टनर है। इस तो इलावा उन्होंने इंडिया के जर्मनी के आपसी व्यापार संबंधी भी टिप्पणी की। It's very clear that India should have a permanent seat in the Security Council. Germany has the same request. If you look at our contribution,
We think it's quite legitimate that we foster also in this direction. But the point is for us that we in the long term want to achieve a common European foreign policy. And of course see this also in the aspect of, in the context of speaking with one voice, also in the Security Council. But of course, as India endorses the German quest, we endorse the Indian quest, there is no doubt. I'm looking very much forward that we can achieve what the Commerce Minister has envisaged with his colleague from the European Commission, and that is to finalize the EU free trade agreement, EU-Indian free trade agreement by the end of this year. That would give, and that's the important part of it, a long-term perspective and of course a direction to EU-Indian cooperation. ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੱਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। There's just blood everywhere and a massive white shark circling the body, half the torso that was left. And I reached to grab the body and the shark came at me on the jet ski and tried to knock me off. And I did another loop, and when I came back to the body, the shark took it and there's just blood everywhere and it's nothing I could do. I just did everything I could. ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।